नाज़रीन आदाब खबरन हुंद बुलेटिन आरिफ हुसैन कादरी हाजिर गोड़ खास खबरन पे नजर मुल्कस मज सपद वुनिस ताम कोरोना वायरस 30,000 खोत ज्यादा बीमार सेहतयाब खजान वजीरन कोर 20 लक्षन करोड़ रुपयन हिंदी इक्तिसादी पैकेज मजीद खुलास जम्मू कश्मीर मज क्लास 4 असामी भर्ती करने अमल मज वुस अन्न बापत हाल कायम कर आमच कमेटी हज मीटिंग कैंचन अहम मामलन पे सपुद ख्यालन हुंद तबादल तो उत्तर प्रदेश सड़क हादस मज 24 महाजर मजूर मार वन खबर तफसील सान हिफानी सेहत तो खानदानी बहबूद वजारत वोनमुत वुनिस ताम मुल्कस मज कोरोना वायरस सत मुतासर सपदमत 30,153 बीमार सेहतयाब सपदमत तो सेहतयाबी हुंद शरह 65.08% ताम वोतमुत पतम 4 घंटन दौरान मुल्कस मज 2,233 बीमार सेहतयाब सपदमत ये जन 3,370 नए मामले ते ब्रोह कुन आमद इस मुल्कस मज कोरोना सत मुतासर बीमारों हुंद कुल तादाद 65,940 ताम वोतमुत तिबी तहकीकस मुतलक भारतीय कौंसल ICMR वोनमुत पतम 24 घंटन दौरान आव कुल कोरोना वायरस कैन 94,350 नमूनन टेस्ट करने इत मुल्कस मज वुनिस ताम 11,34,277 नमूनन टेस्ट कर आमुत अत दौरान ICMR सरकारी तो प्राइवेट लेबार्ट्रियन मंजूरी दित कोविड-19 बापत टेस्ट सहूलत मज बराबर हुर करान वुनिस ताम 362 सरकारी लेबार्ट्रियन तो 851 प्राइवेट लेबार्ट्रियन कोविड-19 टेस्ट करने मंजूरी दिन आमुत कोविड-19 कि पैदा सपदमतिस माशी सूरत हालस अंद बुर दिन बापत ऐलान कर आमचे 20 लाख करोड़ रुपयन हिंदे पैकेज मजीद खुलास बयान करान मुन खजान वजीर निर्मला सीतारमणन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मज ये FDI मौजूदा हद 59% पे हुर्रवित 74% ताम करने तो कैंचन हथियारन तो प्लेटफार्मन हंदिस दरामदस पे ये पाबंदी लगावन अत सिलसिलस मज वोन आज मरकजी वजीरन नई दिल्ली मज अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान यह पाबंदी लगावन पत हेकन ये चीज सिर्फ मुल्कस अंदर मल हन ये मरकजी वजीरन वो भारतीय फजाई हदूदन मुतलक पाबंदी नरम करने सत शहरी हवाबाजी हंदिस सेक्टर सालाना तकरीबन 1,000 करोड़ रुपयन हुंद फायदे तमो वो सिर्फ 60% भारतीय हदूद इस्तेमाल बापत दस्याब तमो वो ज्यादा खुद ज्यादा फजाई हदूदन हज दस्याबी हेके सफरच कमी वक्त ईंधन बचवित मरकजी वजीरन वो प्राइवेट शराकस दारी बापत ये मजीद 6 हवाई अड्डन ऑक्शन करने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान को तिमो कैचन देमन इकदामन हुंद खुलास that all these years, all these decades, we have been flying to most destinations, not through the shortest route, but slightly longer routes, which means you're having more time in the air. This actually has to be rationalized. Optimum utilization of airspace is best because after all the fuel spent is also something which we import. Huge bill goes for that. Finally, the customer ends up paying more price for the flying, and for pilots it's a extra hour of flying or half an hour of flying. Above all, if we are able to optimally utilize the airspace and reach quickly, every one of our time is saved, and therefore now rationalization is going to happen. We will be able to get to our destination at the shortest possible time. खबर बेचे मगर गोड़ी वक्फ वो डॉक्टर साहब हैं भाई साहब खांसी और बुखार था सोचा चेक करवा लूं नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें
अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबरन मच बेतुन खैर मकदम कोविड-19 किन पैदा सपदमत मशी सूरत हालक मुकाबल करने खतर सरकार तरफ ऐलान करना आमत 20 लाख करोड़ रुपयन हंद पैकेज प्रत सोथरिस पे खैर मकदम करने लुकन वन अमि पैकेज के बरकत मिल इकतसादियत इस्तेहकाम तो सती मिल कोविड-19 किन आम लुकन बुथ मुश्किल दूर करनस मज मदद वादी हंद लुको तमि पैकेज खैर मकदम कोर्मुत ये मुख्तलिफ जिलन हंद लुको अत पे इत्मीनान बोमुत। उनका अनाउंसमेंट है कि वो हमने उन 2.5 करोड़ और किसानों को हमने जोड़ा है इस स्कीम के अंदर। डेफिनेटली इट इज़ अ फ्रूटफुल स्टेप एंड हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे आगे भी स्कीम्स, आगे भी ऐसे फैसिलिटीज़ किसानों को मिले। बिकॉज अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो पूरा इंडिया एग्रीकल्चरल लैंड है, तो सारा जो अभी शहरों में रहते हैं, बाकी जगहों पर रहते हैं, तो दे ऑल डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। अनलेस एंड अनटिल वी विल नॉट स्पेंड मच अमाउंट ऑन द एग्रीकल्चर, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल दैट वी विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड। तो इट इज़ अ बिग स्टेप, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। हम प्रधानमंत्री जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने जो ये पैकेज का ऐलान किया है, इस बात के हम शुक्रगुजार हैं कि वो उसने महिगिरों का भी नाम इसमें लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा भी ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। यथ हालतस मज यथ लॉकडाउन मज युथ स्टेप तुलन वारिया असल अम सद अख चीज फायदे अम सद बचन KCC वर्ल्ड तो वेंडर्स यम ते बचन। शुक्रगुजार गवर्नमेंट ऐलान कोर पैकेज खतर लुकन खतर असल, मगर शुक्रगुजार यहान यह कि गसन दस्ती पान पैकेज त्रा ये मतलब आराम वात क्या प्रॉब्लम गसान वनकस हको ब्रो पन कार बे स्टार्ट कर। गवर्नमेंट कदमस वेलकम करान कदम तुल इनिशिएटिव असल कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी गवर्नमेंटन तिकाज पटर डेली वेजर इन खतर असल तिकाज यह दोहस जेना शामस खेवान यह बुनियाद खैर मकदम करान। CD हस्पताल श्रीनगर आवाज 1002 नमूनन टेस्ट कर तमो मज आय 17 नमूने मुस्बत लबन। 14 मुस्बत मामले अनंतनाग जिले से ताल्लुक थवान यह 3 मुस्बत मामले कोलगाम जिले से वाबस्त। आ दौरान आय सिक्किम श्रीनगर 57 नमूने मुस्बत लबन, यमो मज 10 जमिक 12 कुपवारिक 3 अनंतनागिक 1 वर्मलिक तो 1 बडगामिक। इतकन आखिरी इतला वातनस ताम जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस 43 नई मुस्बत मामले ब्रोह कुन आमद। आ दौरान आया सिक्किम बेमने सेहतयाब सपदमित 10 बेमार रुखसत करने, तमो मज 7 बडगाम जिलिक 3 बंडपुर जिलिक तो 1 शुपियन जिलुक। तह चत जे अत हस्पताल मज दाखिल करने आमतो 168 कोरोना वायरस बेमारों मज वनुस ताम 155 मरीज सेहतयाब सपदमित। मुल्की लॉकडाउन तहत जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में तमाम किस्म सरगर्मियन पर पाबंदी आयद, यम कि दोहदिशी जिंदगी पूरे पे थाम सपजम। श्रीनगर लॉकडाउन कि आम जिंदगी मुतासर तो बाजार दयान। लॉकडाउन नतीजे खैज बनाने बापत सड़कों पर रुकावट खड़ा करना आमत तो मुख्तलिफ जायन सिक्योरिटी एहलकार तैनात करना आमद। ताहम जरूरी खदमतन से वाबस्त गाड़ियन तो एहलकारन ज़ाब्तन तहत पकनुक इजाजत दिने यवान। पुलवाम जिलस मज लॉकडाउन पे पूरे पे अमल सपदान, सड़कन पे दूर दूर तम गाड़ियन हुंद नेब निशान। ताहम सिर्फ जरूरी खदमतन से जुड़ित गाड़े या द्रंट गसान। अमि अलाव कोविड पास थवन वाले नफरन योत पकनुक इजाजत दिने यवान। जिलस मज मुख्तलिफ सड़कन तो चुवतन पे गैर जरूरी युन गसन रुकावन खतर रुकावट खड़ा करना आमत तो फोर्सेज एहलकार तैनात। बडगाम जिलस मज लॉकडाउन पे पूरे पे अमल करने तो जिले के सारे इलाकन मज कारोबारी सरगर्मी मुअत्तल। जिले के तकरीबन सारे इलाकन मज आज सड़क दयान। आ दौरान आय सिर्फ जरूरी खदमतों से मुंसलिक गाड़ने योत पकनुक इजाजत दिन। आ दौरान बंडपोर जिले इंतजामिया दफा 134 खिलाफ वर्जी करने किन 15 दुकान बंद करमित। बंडपोर के जिला तरक्की कमिश्नर सदिस हिदायत पे कोर बंडपोर तहसीलदारन मुख्तलिफ इलाकन हूं दौरे। यथ दौरान 13 दुकान तो 2 कम्प्लेक्स यल वुचने आय तो पत आय यह कार्रवाई अमल मज अन्न। जिलस में जारी लॉकडाउन अमल आवरी हूं जायजे हन के गर्ज कोर वर्मलिक जिला तरक्की कमिश्नर GN इतवन अज मुख्तलिफ इलाकन हूं दौरे। आ दौरान हो तमो कैंसन जायन मूवमेंट पासन तो कैंसन सेल्स आउटलेटन हूं जायजे। जिला तरक्की कमिश्नरन दुत कोरोना वायरस नजर तल थवित बाकी एहतियात वर्तावन अलाव समाजी दूर कायम थवनस पर जोर। तमो वो जिलस में जरूरी चीजन हूं गुतुल स्टॉक मौजूद तो यह लुकन ताम वातावन खतर मरबूत निजाम तरतीब दिन आमुत।
जम्मू कश्मीर सरकारन ओमान दुबई तो ईरानस मज फसित येतिक बाशिंद वंदे भारत मिशनस तहत वतन वापस अन्न बापत मरकजी सरकार सहित रब्त कोरमुत अत सिलसिलस मज चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यमन खारजी सेक्रेटरी हर्ष वर्धन सिंगालस खत लिखमुत तो वोनमुत यमन नेबरिमन मुल्कन मज जम्मू कश्मीर दरमंद बाशिंद गचन वंदे भारत मिशनस तहत वापस वतन अन्न यन कशीर सूबाई कमिश्नर PK पोले यम स्टेट कोऑपरेटिव बैंकिंग चेयरमैन तह हेतस मुतलका अफसरन हज अकिस मीटिंग मज बैंकिस कामकारस जायजे तमो दित बैंकिस कामकारस दौरान तमाम बिजनेस यूनिटन पे कस्टमर सर्विस बेहतर बनावनस पर जोर अत मौके पे आय बैंक खतर जवाबदेही तो शोचर यकीनी बनाने बापत दोन मेंबरन पे मुश्तमिल ऑडिट कमेटी तश्कील दिन जम्मू कश्मीर मज भर्ती मुहिम तेज करने तो अत मुहिम दौरान प्रत सोथरिस पे शोचर बरकरार थवन खतर हाल तश्कील दिन आमच कमेटी हज सपज आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर तो हार्टिकल्चर नवीन कुमार चौधरी सद सदारत मज मीटिंग या दौरान भर्ती मुहिम से जुड़ित मुख्तलिफ गोशन खास पे क्लास 4th असामियन हज भर्ती मज तेजी अन्न के हवाले मुख्तलिफ मामलन मुतलक सर सोचने आव कमेटी हज रिपोर्ट यह मंजूरी बापत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सोजने कमेटी मुतलका अथॉरिटी हिदायत दिन दस्याब असामिय गसन तेजी सान पुरवन यने कमेटी को सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड बुनियादी ढांचे मुस्तकम करने पर ख्याल तबादल तो आय अत सिलसिलस मज कह फैसले निने शकावर मिलिटेंटो चलाव कोलगाम जिले किस फिसल चौकस मज अकिस नाक पार्टी पे गोली यमकिस नतीजस मज पुलिसुक अख जवान मोहम्मद अमीन बगड़ युस संगरवनी पुलवामिक रोजन वोल शदीद जख्मी सपुद सह फौरी तौर हस्पताल वातनावने ये डॉक्टर मर्द करार दित वाक़ पत आय हमलावर छानने खतर तलाशी कार्रवाई शुरू करने पुलिस फौज तो CRPF अकिस मुश्तरक कार्रवाई दौरान रात बड़गाम के वन महल अरजाल इलाके पे मिलिटेंट तंजीम लश्कर तैयबुक अख सरगर्म मददगार जहूर वानी गिरफ्तार करना आमुत तम सदिस दपिस पे आव पत मिलिटेंटन हज अकिस छपन जाय हूं पाय लगाने ये पे काबिल एतराज मवाद हथियार तो गोलो बोरो जब्त करना आव बड़गाम के SSP सद मुताबिक खान साहब बड़गामिक रोजन वल 4 दयम मिलिटेंटन हज मदद करन वल गिरफ्तार करना आमद यम त्रोशवे लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम हंद मददगार तो यह ग्रुप पत्मो कैंसो रेतो पे इलाकस मज सरगर्म जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो नायब सदर उमर अब्दुल्ला पार्टी हंदिस डोरो शाह आबाद के सबक सीनियर लीडर मरहूम गुलाम हसन भट्ट शुमाली हंदिस नामावर सियासी तो समाजी कारकुन हाजी अब्दुल अहद कारस तिहन बरसन पे खराज अदा करान वोनमो यमो दशवी लीडरों प्रत विज लूकन हज बेहबूदी तो पार्टी हज मजबूती बापत काम कर्म पार्टी हंदो दोमो लीडर तक कोर मरहूमन खराज अकीदत अदा इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सूबाई सदर तो यूथ लीडर एहसान परदेसियन इंतजामिया मुतालबा कर्म बुलवाड पे हरवन ताम सड़क गि शेरपुर करने युस जन लूकन मुश्किल बुथ यन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीडर जगमोहन सिंह रैनहन मरकजी सरकार तरफ ऐलान करना आमतिस पैकेजस मज जम्मू कश्मीर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर शामिल न करने सख्त मजम्मत कर्म पन्निस बयानस मज तमो वोनमुत लॉकडाउन सत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सख्त मुतासर सपदमुत ये जन पथ कुन तो अमन कानूनी सूरत हाल खराब रोजन कन सारवी खुद ज्यादा यमन खसार सपुद तमो पब्लिक ट्रांसपोर्टन राहत वातावनुक लेफ्टिनेंट गवर्नरस मुतालबा कोरमुत जम्मू कश्मीर JDU सदर GM शाहीनन पन्निस अकिस बयानस मज वोनमुत मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल इंतजामिया यमन स्कूलन मज ज़ेर तलीम शुरन हंदन वालिदैन फीस भरने के हवाले परेशान करान तमो लेफ्टिनेंट गवर्नरस यम हिदायत जारी करने अपील कर्म लॉकडाउन खत्म सपदनस ताम म करिन तम फीस भरने के हवाले वालिदैन परेशान तमो यिथन सरगर्मियन मज मुलवस स्कूल इंतजामिया खिलाफ कार्रवाई करनुक मुतालबा कोरमुत PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन मुख्तलिफ महकमन मज काम करान डेली वेजरन हज उजरत लॉकची ईज ब्रोह वागुजार करने इंतजामिया अपील कर्म पन्निस अकिस बयानस मज तमो वोनमुत लॉकडाउन किन डेली वेजरन हंदन अयालन सत दयम नफर तह सठा मुतासर सपदमत तमो वोन योदवे जन लॉकडाउन जरूरी तहाँ पज इंतजामिया सह कर जरूरतमंदन राहत वातावन खतर इकदाम बड़गामी जिला तरक्की कमिश्नर तारिक हुसैन गनायन यस पाबंदी सेख तो बाजर गैर कानूनी तरीके कड़नस पर लजम सह अमलावन खतर जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमन जिला इंतजामिया के सरगर्म अथवा से अमि सरगर्मी खतर इस्तेमाल करने 4 ट्रैक्टर JCB तो डंपर जब्त कर्मित अमि कथ जानकारी दिज जिला मजिस्ट्रेट सद सदारत मज मुनक़द अकिस मीटिंग दौरान बड़गामिक जिले माइनिंग अफसरन तमो वो अत गैर कानूनी काम मुलवस नफरन निश पतम 2 रेतन वरियन दौरान लक्ष बोध रुपयन जुर्माना वसूल करना आमुत पुलवामा जिला तरक्की कमिश्नर डॉक्टर राघव लांगरन हेच जिलस मज
ترال کین میڈورا گلشن پور تو کینچن دیمن گامن ہند دور کرنس دوران گامی ترقی ہندس محکمس مز بحال کرنا آمتن سرگرمین سام تمو ہیوت ایم ڈی نریگا تحت رابطہ سڑک تعمیر کرنس سگونچن کولن ہز صفائی تو کینچن دیمن ترقیتی کامن جائزہ تمو کر کینچن جائن موزورن ست کت بات گاندربل ضلع ترقیتی کمشنر شفقت اقبال کور JNV ہفتہ بر قائم کرنا آمتس کووڈ کیئر سینٹرس معائنہ تمو ہز ات دوران تتہ دستیاب سہولتن سام پتہ ہز تمو گرلز ہاسٹل گاڈری ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین مرکزس مز دستیاب سہولتن تہ سام یہ کت یقینی بنانے خاطر زِ لاک ڈاؤن کن گژھِ زرعی سرگرمین تو ات وابستہ لکن کم کھوتہ کم اثر پیون زراعت محکمن کہیا اقدام کرمت زراعت محکمک ڈائریکٹر سید الطاف اعجاز اندرابین وونمت کیمیائی کھاد سلبہ دستیاب تو محکمہ مختلف فصلن ہند پیداوار بڑھانے خاطر پریت ممکن کوشش کران جموں کشمیر الیکٹریکل امپلائیز یونین ہند صدر محمد مقبول نجارن وون سری نگر اکس پریس کانفرنس دوران بجلی محکمہ مز کام کران ملازم تہ فرنٹ لائن ورکر تو انتظامیہ صرف 10% ملازمن کووڈ پاس جاری کرمت تمو محکمہ کن سارے ملازمن کووڈ پاس فراہم کرنک تو نو کلاس 4 ملازم بھرتی کرنے بجائے محکمک ڈیلی ویجر مستقل کرنے مطالبہ کورمت تمام فرزندان توحیدن شب قدر مبارک کران انجمن شہری شیان جموں کشمیر صدر آغا سید حسن الموسوی الصفین ورمت قرآن نازل سپدن چہ ام مقدس راز ہز برکت چھ امت مسلمہ باپت نجاتک سرمایہ شپینک ناماور سماجی کارکن مبارک احمد صوفین ضلع کن صحافین مز PPE کٹ تقسیم کرمت تمو ونمت کووڈ 19 مقابلہ کرنس دوران صحافی تہ اہم رول ادا کران تو پن زندگی خطرس مز تراوان تکیاز لوکن تام خبر تو زانکاری واتنس مز صحافین ہند اہم رول کیونکہ یہ بھی فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں جس طرح ہمارا پولیس کام کر رہا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے یا میونسپلٹی کام کر رہی ہے اسی طرح یہ بھی فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں یہ بھی جاتے ہیں ان جو ریڈ زونز ہیں ان میں جاتے ہیں ان سے لوگوں کی وہاں کی مطلب یہ حالات پوچھنے کے لیے وہاں کی ان کی پرابلمز کیا ہے کہ ان کی سیفٹی بھی ضروری ہے یہ بھی ہمارے سماج کے جیسے ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ کام کریں اس سے ہمارا میڈیا بھی اس سے کام کر رہا ہے ان کی سیفٹی بھی ضروری ہے SDRF تو کولگام پولیس اکس کاروائی دوران پیر پانچال خطہ کے شینو ست ولد بابا پیر پانچال علاقہ مز پھسمتن 5 خانہ بدوش عیالن ہند 30 نفر بچاؤن آمت تمن یہ اطلاع میول ات علاقہ مز مہور ریاسی پہ نندی مرگ کولگام یم خانہ بدوش عیال شین طوفانس مز ہینہ آمت کولگام پولیسن دیت وقتس پہ SDRF تو پولیسک اخ مشترکہ ٹیم تشکیل تو آئی 30 نفر بچاؤن اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرسن BG فرسٹ سیمسٹر بیچ 2019 کن ریگولر طالب علمن ہند امتحانی نتیجن ہند اعلان کورمت متعلقہ طالب علم ہیکن کالج ویب سائٹ پہ رزلٹ وچھت اتر پردیش مز گئی سڑکہ ہندس اکس حادثس مز 24 مہاجر موزور مار یہ موزور اکس ٹرکہ مز سوار یس آج صبح سلی اوریا ضلع مز قومی وتہ پہ بیس اکس ٹرکہ ست چھاونہ آئی یہ موزور فیصل آباد پہ گورکھپور گژھان تو آخرس پہ موسمس متعلق زانکاری موسمیات محکمہ کی اطلاع مطابق پگہ شام تام وادی میں سود رو تو وزمالن گگرائن سے رود پھیر والنک انمان سری نگر آو آزدوک زیادہ کھوتہ زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس یس رات کم کھوتہ کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جامع آو آزدوک زیادہ کھوتہ زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس تو رات کم کھوتہ کم درجہ حرارت آو 22 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ہپاریا مظفر آباد آزدوک زیادہ کھوتہ زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس یس رات کم کھوتہ کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو گلگت آو آزدوک زیادہ کھوتہ زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس تو رات کم کھوتہ کم درجہ حرارت آو 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے خبرن ہند یہ بلٹن دی اجازت خدا حافظ